Assalamu alaikum, my mindful community all across the globe, and assalamu alaikum to everybody who's on the official pages for the field worldwide. सबसे पहले तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम आज थोड़ा सा डिलेड ऑनलाइन आए हैं, और जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया हुआ था, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे और हमारे पेज के ऊपर कि आप लोग कहाँ रह गए, आज आप लोग आ नहीं रहे क्या। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना आए, बिकॉज ये जितना आप लोग एक्साइटेड होते हैं अबाउट द प्रोग्राम, हम उससे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस every single time, and I'm so happy to have you on board our mindful community. और तलहा, आपने सबसे पहले आज मुझे बताना है मूड एलिवेटर पे तलहा का मूड कैसा है, आपका वीक कैसा रहा। सब लोग जल्दी जल्दी मैसेजेस करें और मुझे बताएं कि मूड एलिवेटर पे आज मूड स्विंग्स या इस हफ्ते मूड किस तरह का रहा है। जरूर मैसेज में लिखिए ताकि फिर हम उसको भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यूरियोसिटी से नीचे थे या क्यूरियोसिटी से ऊपर। अस्सलाम वालेकुम साजिद अली सफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आवर पेज। जैसे मैं हमेशा जब हम शुरू करते हैं अपना ट्रांसमिशन जो ये लाइव होता है, मैं हमेशा आप लोगों को एक रिमाइंडर देती हूँ और एक थैंक यू नोट देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के डायरेक्टर मिस्टर अरबाब नसीबुल अकासी को, जिनके साथ जो फाउंडर भी हैं फील्ड वर्ल्ड वाइड के, जिनके साथ जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के साथ जो हमारा ये कोलैबोरेटिव है, जो हमारे मीडिया पार्टनर्स भी बने हुए हैं माशाल्लाह, उनके साथ आज हमारा एक और बहुत बड़ा स्टेप फर्दर आगे हम बढ़े हैं, जो कि अब ये है कि फील्ड वर्ल्ड वाइड के साथ हम एज मीडिया कोलैबोरेटर्स जब भी हमारे प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए जाएंगे, they will be presented on all the social media handles all around the globe within especially the 90 countries जहाँ पे सब जगहों पे ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट लाइव जाती है। तो जी हाँ, ये एक और स्टेप आगे है। फाइजा नईम ने भी हमें ज्वाइन कर दिया है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप मेरी एक्साइटमेंट से आप सब लोग ही समझ रहे होंगे और जान चुके होंगे कि आज मैं और भी ज्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आज जिनको हमने अपनी माइंडफुल कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए दावत दी है और जो हमारे साथ आज हैं, वो एक बहुत ही माशाल्लाह इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी है, और उनका जो कोर एसेंस है और जो उनके काम का एक फोकल पॉइंट है, वो भी है अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना और अपनी कम्युनिटी के लोगों के की अपलिफ्टिंग के लिए काम करना। सो हम उसकी तरफ एक थोड़ी देर के बाद आएंगे। सज्जाद कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मूड वाज वेरी गुड। फाइजा नईम भी कह रही हैं मूड उनका बड़ा अच्छा है, वेरी गुड, और सब कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आप लोगों की इस इंकरेजमेंट के बगैर, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर नन ऑफ दिस इज पॉसिबल। मेंटरिंग हब की टीम और मैं एज द फाउंडर ऑफ मेंटरिंग हब बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तलहा हमारे साथ एक और डिटेल शेयर कर रहे हैं, मुझे जल्दी से कमेंट लेने दें। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे द मूड वाज फ्लक्चुएटिंग but was excited for today's program. Thank you Talha, thank you so much again. इसी के साथ साथ मेंटरिंग हब के प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे जबरदस्त डेवलपमेंट्स हैं जो कि मैं अपने गेस्ट को ऐड करने से पहले नहीं गेस्ट नहीं, हमारी नए फैमिली मेंबर को ऐड करने से पहले स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड का entire board of advisors hai. I have had the opportunity to become a part of the board of advisors with them, और उनके साथ हम regularly developmental और organizational development programs पे काम करते रहे हैं। उसी के साथ साथ मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का एक एलिमेंट है जो मैं सब अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो वर्ल्ड वाइड हमें देखती है और हमें ज्वाइन करती है और अप्रिशिएट करती है, वो ये कि पेस इंटरमीडिएट कॉलेज जो है, जो एक नया वेंचर है, एक नए बहुत ज़बरदस्त इनोवेटिव मॉडल के ऊपर तैयार किया गया है और फाउंड किया गया है, जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे
काबिल दोस्त अदील दरवेश जो हैं उस सब के पीछे भी हैं और फ्रंट पे भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मैं करना चाहूँगी, क्योंकि और अच्छी खुशखबरी ये है दैट आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स विद देम एज वेल. आई फील privileged and honored to be a part of the board of advisors with PACE as well. मैं ज़रूर recommend करूँगी कि जो पेस कॉलेज का जो मॉडल है ना, थैंक यू सो मच फायजा, जो मॉडल है वो ये है कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका मॉडल ये है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे कॉलेज की तलाश में रहे हैं जो सिर्फ ग्रेड्स पे काम ना करे, आपकी ग्रूमिंग पे काम करे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे, आपकी लीडरशिप स्किल्स पे काम करे, और सबसे ज़रूरी और बेहतरीन चीज़ आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे काम करे. तो वो ये सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स उन्होंने इसको एक एड ऑन बनाया है, जो कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके पास अब एडमिशन्स जो है वो क्लोज टू क्लोजर है. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो जो भी ऐसे इंटरमीडिएट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे किसी नए ज़बरदस्त मॉडल के इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम इजलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, and please stay tuned for the rest of the program because there's a lot of good things coming up. So yes, so PACE को बहुत मुबारक, and also because of the fact के तला अच्छा है ना कितना, बिकॉज ये जो मॉडल है वो बहुत एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है. मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो लोग जो इंटरमीडिएट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो कोई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाह रहे हैं, ज़रूर पेस को चेकआउट करें. उनके फेसबुक पेज से वो लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं. मेंटरिंग हब भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स और उनके पोस्टर्स वगैरह हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, जैसे हम पहले भी कर रहे थे. सो ये तो हो गई ये वो खुशखबरियाँ जो हमारे एंड पे हैं, और अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं. मास्टर क्लास की जो अनाउंसमेंट हमने लास्ट टाइम की थी वो फाइनली अब इंशाल्लाह हम बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप लोग उसकी कैंपेन्स जो हैं वो देखना शुरू कर देंगे ऑनलाइन, और हम उसके रजिस्ट्रेशंस खोलने वाले हैं. उसके साथ साथ जो हमारा वर्चुअल मीटअप है, जो हमारे माइंडफुल स्किल्स क्लब का है, वो भी हम अनाउंस करने वाले हैं इंशाल्लाह. हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये मेंबर्स हमारे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सबके साथ एक हम म्यूचुअल गुड टाइम और एक गुड स्पेस में हम ये कर सकें ताकि सब लोग इसका पार्ट बन सकें. तो हमारे एंड की डेवलपमेंट्स जो हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही हैं. आप लोगों के एंड पे क्या डेवलपमेंट्स रही हैं, क्या चल रहा है, हाउ हैव यू बीन दिस वीक? जैसे मैंने पहले कहा, सबने हमें अपना मूड भी बताया, मूड एलिवेटर पे कहाँ चल रहा था. मेरा मूड मेरी बोलने की पेस से आप लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल सुपर्ब है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है. बहुत अच्छा मेरा मूड है, एंड क्यूरियोसिटी से डेफिनेटली ऊपर है. और अब मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चाहूँगी कि मैं अब अपने नए फैमिली मेम्बर को स्ट्रीम में ऐड करूँ, और उनसे हम बातें करें, उनकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे. थैंक यू साजिद, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का. आपने हमें हमेशा अपने बेस्ट विशेस और दुआओं में रखना है, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी हैव टू कवर इट टुगेदर, है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. तो हम जल्दी से अपनी फैमिली को ऐड कर लें, हमारी न्यू फाउंड फैमिली मेंबर जो है माशाल्लाह. लेट्स क्विकली ऐड. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Zora? I'm great. How about you? Alhamdulillah, I'm doing well. Thank you so much for taking in our request for coming into this program. सबसे पहले उरूज, और please know the fact that you are a very proud. You make us very proud. I had to say this to you because I've been through your profile. I've been looking at what you've been working at, mashallah, and you make us proud. You make Pakistan proud, mashallah, and we're so happy to have you become somebody who's putting up the torch there. So अच्छा, थोड़ा सा मैं उरूज सिर्फ आपको बताऊंगी कि हमारे पास कमेंट्स आते रहेंगे. मैं कोशिश करूंगी
कि आपकी इजाज़त से हम थोड़े थोड़े लेते रहे साथ साथ, बिकॉज हमारा कम्युनिटी हमें वर्ल्ड वाइड ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट से हैं, बहुत सारे यूरोप से हैं, यूएस कनाडा से भी लोग होते हैं। तो आई विल ट्राई कि हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जितने ले सकेंगे उतने मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप मुझे अब मैं कम बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, अब मैं आपको ये वो दे दूंगी। आपने सबसे पहले तो हमें बताना है कि उरूज का जो विजन था या जो पैशन था, क्या उरूज वहीं पे चल रही है, उसी उसी तरह चल के इस ये वो उरूज बन गई है जो अभी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं? और आपकी जर्नी के बारे में हमें प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Okay, well, I hope मैं वही उरूज हूँ जो शुरू से चल रही थी. I hope, inshallah. I think it's a work in progress, for everyone. But my journey, I think, started a while ago. मैं actually profession से तो physician हूँ. I'm a resident physician in the department of psychiatry. Or, as any physician knows, it's a long process, especially here in the United States. It's a great number of years of education and a lot of commitment and time. So maybe it was Pathy. I was doing that. I'm sorry about that. That's my phone. No worries. Don't worry about it. It's okay. So I was doing that as anticipated. I didn't anticipate being off of that track in any capacity. However, in the middle of my medical education, मुझे एक opportunity मिली to complete a master's in education. तो पहले मैं थोड़ी सी hesitate हुई उस चीज़ के लिए, क्योंकि obviously I as a physician and as somebody who's trained to be a physician, it's very hard to get off of that train and then go back to that train. So it was a big decision for me to sort of take a couple of years और वो masters complete करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी एक decision. Okay. There were personal reasons why I decided to pursue that degree as well. तो उस complete करने के बाद I decided to do my thesis on girls' education in the developing world, and particularly in Pakistan. Wow. Obviously, that was my background and my personal heritage and everything. और मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी. I was born in Karachi. A lot of my family is still there. Extended family is all there. So it was very fitting. And after I completed that research, I ended up presenting it at various schools of education across the country, and it started to get a little bit more attention and traction. And by the end of my master's degree, I was able to secure a grant. And the original plan was to donate the grant to an NGO of my choosing, particularly in Pakistan. आपको तो पता ही होगा पाकिस्तान में कितनी various NGOs, they do amazing work. So there was no lack of opportunity on that front. So that was my plan, and I came back to Chicago to finish my medical education. मेरे 2 साल बाकी थे. So I was sitting on the grant essentially for about a year and a half. और तकरीबन मेरे fourth year medical school के करीब में मेरी जो advisor थी for my graduate school, she proposed the idea of using the grant to create a documentary film on the circumstances that cause young girls to drop out of school in the developing world. And so it was kind of a bold proposal, to say the least. So obviously I didn't know the first thing about filmmaking, directing, producing. वो तो मेरे arena में ही नहीं था बिल्कुल भी. Art form is something that is embraced, let alone taught in the world of medicine or even in education in a lot of I thought about it, and I was very lucky. I got connected to a production company in Chicago. They put me in their fellowship program. So उन्होंने मुझे काफी mold किया. They taught me the ins and outs of directing and producing and what it means to create a film, the ethics of filmmaking. They had a wide variety of workshops that were very, very beneficial to me. So then I decided to pursue it. I said, okay, let me try it. It was a very scary proposition. Obviously, मुझे बहुत डर लग रहा था, so that meant that I had to attempt it, right? So that's kind of yes. So I took some time between starting my training as a physician, which is what I'm doing now, and medical school to create the film. And so it was a long process. We had to figure out which school we were going to choose, which location we were going to be in, who we were going to film, how we were going to film. So I had a cinematographer with me. हम कराची गए थे, तो एक छोटा सा इलाका है चश्मा गोथ. I'm not sure you're familiar with it. Most people aren't. It's a very kind of desolate type of village, about I want to say an hour or so outside of Karachi. So we found a family and a girl, and her life story was essentially the manifestation of the research that I did.
in graduate school. तो वो सारी जो circumstances होती हैं, like early marriage, early work, financial distress, family dynamic that's very patriarchal and dependent on men in order to move forward. All of those things you see in her story. So the film itself follows about a year in her life as she kind of struggles against the circumstances that are pressuring her to drop out of school. So that's sort of how it came about. And फिर मैंने अपनी residency training शुरू करी here I am currently. And in my first year of residency, I edited the film. Our second year, it premiered, and now it's sort of taken on a life of its own, and it's really kind of transformed a lot of my aspirations as a physician, my career long term, and so that's sort of the short version of the story. Wow. Urooj, having so much, ये बहुत सारे, I think this must be a common question to you, being asked the fact, इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे करती हैं? Overwhelming table full of stuff, and then filming a documentary. Where did that really actually take you, and where has that where is your passion now, Urooj? We would like to know, when it comes to giving back to the community, what is that one thing that Urooj is holding on to or working towards? So I don't necessarily think it's one thing. There are multiple things that I'm interested in and that I want to pursue. So I think right now my goal is to try to figure out how I can really merge all of these interests into one dynamic kind of career. So which are the advocacy work that goes along with making social justice documentary films, along with my training and background as a physician, along with my background in education. So अभी जो मेरी kind of specific जो interest है, it's more geared towards the interface between human rights and psychiatry. So for example, say you're in a certain area in Karachi and there's a population or a organization decides to build a bridge, right? So that particular bridge the construction of that bridge may displace a number of people. It may displace an entire community, meaning it will leave it'll leave them homeless, without access to schools, perhaps without access to adequate health care if they had it at all. Or वो यहाँ भी होता है. It happens here in the United States too. It's not just specific to the developing world. So my interest is figuring out how we can really document the psychiatric impact of those things within a community, and how we can hold those organizations accountable for what they really do, which is create this dynamic of trauma and this cycle of just psychological distress within a family unit, within a society, and eventually it trickles down to the next generation. So that's kind of my interest now, and I think my film highlights that a little bit too, generational trauma and how it's trickled down to the next generation. The young lady that we filmed, she also had a young sister. तो अभी तो छोटी बहन जब हम फिल्म कर रहे थे तो वो तो 9 साल की थी, but you could see कि eventually उसका भी यही situation होगी. She will also have to deal with all of most probably, yes. So it's a generational thing. Or for next generation को भी उसके effects होंगे, the next generation will have those effects too. So you've just made me think and really reflect on the fact that I know that you're going to agree, Urooj, that this is mostly more than 55-65% of the population that we're looking here in Pakistan at. जो issue की आप बात कर रहे हैं, I know it's that I would like to further simplify to the audience, saying the fact कि जब हम mental health की बात कर रहे हैं, जब हम mental balance की बात कर रहे हैं, जब हम human character building की बात कर रहे हैं, human growth की बात कर रहे हैं, तो ये तो pain point है Urooj हमारा as a community, और as on the whole ही हम अगर देखें, even now the community and the country still struggles with having so many characters out of the school. अभी भी हम below the belt है when it comes to a normal stable environment given to the children, to communities. जो normal जिसको हम कहते हैं कि एक civic life होती है, जो एक civic pattern में होती है, जिसको हम कहते हैं एक structured pattern होता है, वो भी missing है. When was the last time that you were down here in Pakistan, and how long has it been since you've seen all of this being here?
I was there last in 2017, so it's been a few years. And I was at that time I stayed for a number of months due to the filming Okay. of Soulful and all of Okay. Okay. I asked the question why because if you were down here in 2017, you must have noticed the fact that 2017 and now 2020, if we were to look at the fact that this has just been a few years now, but things haven't changed too much. Mhm. So I would really want to know, okay, and I'm sure that you must have been following how to work towards your character and then you evolving into all of this. Where do Right. you see Pakistan now as what you hear from the news and what you get to hear back from your extended family? Where do you think all of this has moved? How do you think this has moved? What is your perspective? Well, 2017 से अब 2020 में. I don't think it has very much, unfortunately. I think, Pakistan is a very complex country, like most countries are. मगर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा, it's a little bit more pronounced in our part of the world. तो इतने सारे मसले Yes. जब हो जाते हैं, it's difficult to sift out कि कहाँ हम शुरू करें, फिर कौन सी next step है, फिर कौन सी next step है. It just becomes very complex. So I think there are a number of Yes. amazing organizations or बहुत very lovely and engaged and committed people within Pakistan that are working towards trying to address some of these issues. But just like anything else, it takes a long time even to make a small amount of change. Yes. Yes, yes. Which is why I think you would agree, Urooj, from the time from 2017 until this time today, you must have noticed over the Facebook and other communities, there have been a lot of cluster groups that have come up, clustered communities that are working on different ends, जैसे आपने अभी कहा, of where there are people who are trying to resolve whatever they can, however much that they can within their community, within their circle, to see कौन कितना latch out कर सकता है. The reason I probed into this question was the fact कि mentoring hub के साथ we brought in the concept of mindfulness, and what we did was that we started training and we started mentoring not just people who were the so-called elites of the country, but we are also working with people from other areas and other cities around Pakistan where these people have had no access to the concepts of mindfulness. So उसके उसके नज़रिए से मैंने ये सवाल इसलिए प्रोक किया कि with with your work and with your inhibitions, with your perspective of Pakistan now, मैं उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँगी, वो ये that we are in dire need at this point in time for a genuine person, और चाहे वो कोई भी field हो ना, Urooj, it can be the medical science, it can be psychiatry, it can be anything for that matter, and I know the community is going to agree. हर जगह पे अगर हमें experts दिख रहे हैं और हमें पता भी है that there are so many people who are licensed or certified to be delivering a lot of wisdom and a lot of help and solution patterns, लेकिन at the same time, Ruch, there's a lapse of genuineness, there's a lapse of trust, there's a trust deficit. I'd be very honest कि जहाँ पे जब हम community को बताते हैं ना, and when we tell them that we're there to help them with something, वो you would see a question mark on their faces because they don't really know if they can trust you with you giving them the right solution or the right way forward. So उसके साथ what we've seen the fact is कि जैसे हम जैसे लोग हैं या वो जो clustered community leads हैं जो कि काम करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को ही being based here in Pakistan, it takes us time, Urooj, to cover up that trust deficit, being with the community, उनको यकीन दिलाने के लिए कि भैया we don't have another hidden agenda, हम तस्वीरें लेके नहीं चले जाएंगे, and we're going to keep coming back to you to make sure that we're going to keep investing in you, in your development, so वो एक बहुत बड़ा गैप है उरुज जो कि बड़ा होता जा रहा है वक्त के साथ. और जो कम्युनिटी को नीड है इस वक्त सबसे बड़ी वो है उन जेन्युइन एक्सपर्ट्स की और उन जेन्युइन लोगों की जो कि
एकेडमिकली हायर हैं, प्रॉब्ली ऐसे स्पेसेस में हैं जैसे आपके जैसे ब्रिलियंट लोग जो कि हमारी कम्युनिटी को समझ सकते हैं, बिकॉज यू नो अस, यू नो द लैंग्वेज, यू हैव योर हेरिटेज एंड योर ट्रेडिशनल वैल्यूज अटैच टू अस. तो आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए एज द डॉटर ऑफ द सॉइल, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद पीपल. हम जरा जल्दी कर पाते हैं. So we're in dire need of people like you who would be genuine and honest enough in giving feedback, or probably working, through programs, through various programs. So I would want to know, उरूज, के आपका जो ये एलिमेंट है, ये मेरा बड़ा एक यूजुअल क्वेश्चन है जो मैं जरूर पूछती हूँ. आपके अंदर का जो ये क्वालिटी है गिव बैक वाला, जिसने आपको ये डॉक्यूमेंट्री में भी लेकर आ गया, यू केम डाउन बैक टू कराची, आपने रूट्स भी देखे, आपने सब चीज करा, ये एलिमेंट आपको एक्चुअली कहाँ से मिला ऑल थ्रू योर लाइफ लाइन अभी तक? आपका मेंटोर कौन रहा है? Who's been your mentor? I've had a variety of mentors. I mean, zyadatar, first and foremost, my parents. You know, I think they instilled a great deal of love and compassion for Pakistan and Pakistani people. घर में उर्दू ही बोल सकते थे, English बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे. So I think that's where it started, you know. And as I just continued on in my education and my career, there were various things that really caused me to question what my purpose was, what I wanted to do with my life, where I saw myself going. And alhamdulillah, I've been very lucky in the sense that I've had great people in my life that have really guided me towards. I'm sure. फिर भी मैं आपको पूछूंगी, कोई ऐसे हैं लोग जिनका नाम आप लेना चाहेंगी? That would love to hear the fact कि हम उरूज के mentors रहे हैं. वो कौन लोग हैं? अम्मी, अब्बा, family में, teachers, professors, yes, कौन? Of course, mostly my parents. I had a wonderful teacher. जो मुझे कभी भी I'll never be able to forget him. Mr. Arnold was his name. जब मैं यहाँ आई थी, we actually immigrated to the United States when I was 7. तो वो मेरे पहले teacher थे. He was my first teacher, and ज़्यादातर मुझे English बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती थी. मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. Like, I couldn't understand my environment and what was going on. So he really kind of helped me. I think that's the only teacher whose name I fully remember from elementary school, because he really facilitated a love of learning, to a young student who was an immigrant at the time and didn't really know, didn't know right from left. So yeah, and there have been many others as well, and I can't all of them, but those are the big for sure. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताएं, because you all also aspire to keep leading women into the leadership role. I understand that आप उस genre में भी बहुत सारा काम करती हैं. What are those heartfelt pointers that you feel we miss as the female community here in Pakistan? I understand हम सबके resources जो हैं वो उतने नहीं होते जितने कि आपको किसी first world में मिलते हैं, but at the same time, what have been your heartfelt points when you've been down here in Pakistan? और आपको क्या लगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है पर फिर भी हम उसके ऊपर काम नहीं करते, उरूज, and that we can, इतना मुश्किल नहीं है. What are those things that come to your mind? I think first and foremost, and this is universal all over the world, ये जो mentality जो होती है हमारी कि आदमी leaders बन सकते हैं, क्योंकि historically they're the ones in positions of power, right? Even here in the United States, आप देख सकते हैं सारे presidents, they've all been men, right? Pakistan has a lead on that, क्योंकि हमारे at least, we've been female ministers, so that's been great. Yes. But, तो ये mentality थोड़ी सी हमको होनी पड़ेगी, the concept के leadership capacity only आदमियों के अंदर है. And then I think what happens when women lead is there's this really powerful combination of empathy and compassion that's very inherent in women. Either it's inherent or society teaches us to be more compassionate, to be more loving, to be more giving, all of that. So अगर आप उस चीज को एक leadership qualities like intelligence, organization skills, communication skills, उन दोनों चीजों को जब combine करते हैं, तो it's really unstoppable. I think women are meant to be better leaders than men generally. Or even in recent events, COVID की जो मैं बात कर रही हूँ, that's something that's recent, that's gone on all over the world. Obviously, the countries that have had the best outcomes have been countries that have been led by women. And there's
there's a reason for that. So Very obvious. I think all the resources are there. I think we all have a voice, and we need to be encouraged to use it. I think that's the main thing, and we have to learn to kind of be confident in ourselves and our capacity to lead, and in our capacity to really be more effective than before. So true. And because we're speaking about it. अच्छा यहाँ पे तलहा ने एक मैसेज किया है. Urooj, and he wants to put up a question. तलहा question ज़रूर डालें, and we're going to share the question with Urooj. And in the meanwhile हम continue करते हैं अपना conversation. Urooj, आपने सुना होगा औरत मार्च के बारे में, और आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों में we've developed communities who are talking about women rights, ठीक है. और एंड एट द सेम टाइम आप ये भी सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जो जहाँ फीमेल राइट्स की आती है बात, जहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, वहाँ पे भी सेक्ट्स बन गए हैं, पोर्शंस ऑफ द कम्युनिटी बन गए हैं, बॉक्सेस बन गए हैं, जो कि सेपरेट कर रहे हैं कम्युनिटी को. फीमेल कम्युनिटी ही डिस्पैरिटी में है, जिसमें ये कि ये एलीट फीमेल ग्रुप है, ये मीडियोकर है, ये जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया की हैं. तो कहने का मकसद ये कि एक तरफ जहाँ there are so many community leads that and so many community groups that I am a part of, जहाँ पे promote करती हैं ख़वातीन एक दूसरे को, वहीं पे at the same time we are looking at the fact कि female जो women जो rights की जब बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो rights को और जो एक growth वाली चीज़ को ना उरूज mix कर रहे हैं अपने कल्चरल और अपने रिलीजियस अफिनिटी और वैल्यू सिस्टम को पीछे छोड़ देने वाले एलिमेंट से. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पोस्ट आई एम नॉट ट्राइंग टू tilt the discussion towards another conspicuous one, but ये मतलब this is really something that's been going through my mind कि can we not keep a balance जब हम female इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि a woman is supposed to have equal rights in the community, from the massively followed religion of Islam, जो कि ज़्यादातर लोगों का है within Pakistan. The religion itself allows us to move around and to do so much, and gives us a lot of equal rights. But at the same time, Urooj, यहाँ पे within the community ये हो गया है that there are some communities that are confused. I wouldn't choose any other word. They're just so confused उन दोनों चीज़ों के बीच में कि जब वो publicly इसको address करते हैं उरूज, तो लगता ये है कि वो हमारे यंगर जनरेशन को कह रहे हैं कि हमें अपनी सोसाइटल वैल्यूज, हमारे कल्चरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज को ध्यान में रखना इतना जरूरी नहीं है. सो बीइंग इक्वल मींस यू लूज ऑल ऑफ दोस, पुश देम बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड. मेरा अपना एक माइंडसेट है उसको लेके, पर उससे पहले मैं आपका जानना चाहूंगी उरूज, how comfortable do you feel when you find this out, when I tell you this? Are you somebody who's going to endorse that, or would you be somebody who would endorse bringing up a girl or a female in the community who would keep the right balance of both? What would you say? Well, I would say this concept of keeping the right balance and there being a conflict between what it means to be an empowered female and being a Muslim female don't have to be at odds with each other. Or I think there's a confusion ki baat kar rahi hai, there's a conflation within every society all over the world. It's just more pronounced within the context of Pakistan and certain other developed countries. Those things get confused, right? You're a person and you have ambitions and you have things that you want to accomplish, or आप अपनी आवाज़ भी raise करना चाहती हैं, तो that means you're not a good Muslim, or that means you're not following societal values. But Islam, yes, it's supposed to be our societal value, right? Being somebody who is empowered enough to speak their mind, to say to other people when something is being done that's wrong, to stand up for those who are oppressed. Those are Islamic values too, right? So हम इस चीज़ को conflict में क्यों लाते हैं? That's something that I don't fully understand. Or मेरे ख्याल में ये cultural baggage जो मैं कहती हूँ, that's kind of what it is, more so than anything that has to do with being a good Muslim or being a good daughter or friend or wife or anything.
Okay, so yeah, but जैसे मैंने आपसे कहा कि the reason I probed this question was the fact कि ये बहुत common हो गया है अरूज, और जिसके वजह से there are there are a lot of scenarios when we have young females registering for a program या a session where अगर वो younger होती हैं 15 years की हैं 17 की हैं, Facebook यूज कर रही हैं या platforms यूज करती हैं और register करती हैं. I've come across being speaking to parents who asked us questions, you know, कि आप लोग के सेशन में क्या होगा, आप लोग एक्चुअली क्या कवर करेंगे, and so on and so forth. Because जब हम ओपनली भी कम्युनिटी में बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, वही जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि उनको यकीन नहीं होता कि हम उनको जो है वो एक बैलेंस रखना सिखाएंगे या उस बैलेंस के साथ आगे लीडरशिप रोल में लाना सिखाएंगे. उनको उनका कॉमन एक्सपेक्टेशन ये है कि हम बच्चियों को ऐसा इंसान बना देंगे जो कि कल्चरल और अपने सोसाइटल वैल्यूज को बिल्कुल पुश बैक करेगी और आगे चली जाएगी. मैं यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी टू टेल ऑल ऑफ our community and everybody who's going to watch the rerun of these programs on our YouTube channel कि Urooj also hails from a Pakistani Muslim background. Alhamdulillah, I hail from the same. We've just had different circumstances and resources within our lifelines जिसकी वजह से we've had the opportunity to be out of our country, be educated there, and then come back to our countries to give back to the community. So we feel blessed, but at the same time, we people like us have hailed from the same cultural values, है ना Urooj? And we've had our parents time and time in out again tell us the fact that you know those are things we know invisibly, ये वो चीजें जो हम पीछे नहीं छोड़ते, हम उसको साथ लेके बैलेंस में चलने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. तो हम जैसे दो लोग और हम जैसी और बहुत सारी खवातीन आई फील वाउच कर सकती हैं उन पेरेंट्स को जो अभी हमने सुन रहे होंगे कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं लीडरशिप को लेके या इस चीज़ को लेके कि बच्चियों को उनके राइट्स दिए जाएं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके हो, तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को ये कह रहे हैं कि वो अपनी सोसाइटल वैल्यूज या फैमिली वैल्यूज और कल्चरल वैल्यूज को पीछे कर दें, क्योंकि वैल्यूज और सिस्टम के बगैर तो कोई इंसान पूरा होता ही नहीं है ना. Right. तो आई थिंक ये उरूज के बिहाफ पे मैं भी चाहूंगी कि हाँ सब लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें. अच्छा उरूज, तला हैज अ क्वेश्चन एंड ही आस्क्स us is he's asking you कि आपको क्या लगता है how can we create awareness among our common women and how do you think we can empower them. है तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन आपके ख्याल से वाकई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर हम एज अ सोसाइटी या अगर फॉर इंस्टेंस हम एक कम्युनिटी की बात करें या समझे अगर आपको जो अभी कम्युनिटी लीड सुन रही हैं, आपके ख्याल से वो औरतें और वो खवातीन जो कम्युनिटीज चला रही हैं, लोगों की जिंदगियों को, औरतों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर पाती हैं रोज, वो ऐसा क्या करें यार, वो कौन सा ऐसा मिक्स है जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं, यू नो, एज अ टूल किट टू गिव टू दीज यंगस्टर्स हु आर अराउंड अस, दीज गर्ल्स, क्या. Gee, I think education is the first thing, और ensuring कि हम जितना हम weight लड़कों के education पर देते हैं, उतना ही हम weight, if not more, एक औरत की education पर दें. So there's obviously a saying within our faith कि अगर आप एक लड़की को educate करेंगे तो आप पूरी family को educate करेंगे. That's very true. पूरी community को benefit मिलता है. There's a societal kind of roller coaster, kind of a domino effect that happens when you educate a girl versus a boy. So that's the first thing. Other than that, there are many small ways to empower women and to encourage them to use their voice. Teaching them about money, about microfinance. That's something that's very impactful and something that a lot of communities and NGOs within Pakistan do. They go into rural communities where women generally don't have any education, and they teach them what money is, how to manage it. आप कैसे इस चीज़ को अपने advantage के लिए use कर सकते हैं. So that in and of itself is an empowering exercise. क्योंकि ज़्यादातर औरतें समझती हैं in those rural communities में कि ये चीज़ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है. We don't need to learn how to manage money and understand what it is, and something that's dedicated to the men, right? So breaking that mentality is the first step. And before anything big can happen, there are lots of small steps that need to happen. And these are some of the small steps.
And there are various wonderful organizations within Pakistan that do this on a large scale. But within the family unit itself, अगर आपकी एक छोटी बच्ची है आपके घर में, तो you teach her, just like you teach your son कि अगर एक टायर पंक्चर हो जाए तो उसे कैसे फिक्स करते हैं. Teach your daughter too. She should know how to do that. Or if आप लड़के को स्टोर में भिजवा रहे हैं to get some milk, teach your daughter to do the same thing. Teach her what it means to interact with people, to exchange money, to get change, all of those things. Those are all very, very important. So I think that will go a long way. Sure. और इसी के साथ each comment that you make is bringing me into a situation where I have a question. और मैं एक और चीज़ mention करना चाहूँगी यहाँ पे, वो ये उरूज के हमारे यहाँ empowerment वाला जो लफ्ज़ है ना, and I usually say this, I'm a very open person when I say this, when we talk about female empowerment, we kind of exploited ourselves. Empowerment के लफ्ज़ को हम लोग इस तरह इस्तेमाल करने लगे अपनी कम्युनिटी में कि जब हम किसी ऐसे बंच ऑफ औरतों से बात कर रहे होते हैं बेचारे who have no real clue about empowerment, या कि empowerment उनको किस जर्नी पे ले जाएगी, वो वहाँ फीलिंग ऐसे छोड़ देते हैं या एक फीलिंग डेवलप हो जाती है विद इन दैट ग्रुप कि empowerment शायद कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें मिसिंग एलिमेंट है. And it puts me into a state of shock because I end up telling them ये missing नहीं है, ये है अंदर. And so I would want you to define empowerment once with your perspective, your learning through these years being a woman yourself, and then जैसे आप leadership role की बात कर रही हैं, female women empowerment के जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्या समझने वाली बात है इसमें जो actually हम miss कर रहे हैं? I think I'll start with my own definition of empowerment. For me, it means realizing that you're in control of your own destiny. ये ज़्यादातर जो औरतें जिस society में पली बढ़ती हैं, they're generally taught कि आपका जो future है depends on what your parents want for you, what your brothers and sisters want for you, what your family unit wants for you, and that's great. But you have a sense of agency in that too, understanding and realizing that you have the ability to determine what your actions are going to be is a big thing. It sounds like a small thing, but recognizing कि आप actually एक power of एक area of control में हैं, that's a big revelation, I think, for a lot of women and for people in general. और ये जो आप empowerment की बात कर रही हैं कि ऐसा concept बना हुआ है empowerment के लिए कि जैसे it's only allocated or available to people at a certain status level. अगर आप एक certain education level में हैं तो आपको empowerment मिलेगी. अगर आप एक certain घर में रहते हैं तो आपको empowerment मिलेगी. But it doesn't. Empowerment is a universal concept, And one example that comes to mind is a lot of times when people want to, their kids to be highly educated in Pakistan or anywhere, they think they need to send them to like large institutions and give them access to enormous amounts of facilities that will cost a great deal of money. But that's not true. You can learn just as much as a child going into a grocery store as you do when you go to a huge museum that costs, hundreds and thousands of rupees. So understanding that learning is a concept that can be done anywhere, regardless of your circumstances, regardless of your socioeconomic status, regardless of what types of resources you have access to. Reframing the definition of that and making it something that's accessible to everyone across the board, and not just the most elite of our society. Spot on. Wow. And in all honesty, thank you so much, Urooj, for endorsing that further. कि वाकई में empowerment is not something that's missing. ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी women empowerment कि अगर उरूज को ये प्रोग्राम करें और कहें कि मैं females की empowerment के लिए काम करी तो वो कुछ inject नहीं करेंगी आपके अंदर. मैं भी कुछ inject नहीं करूँगी आपके अंदर. You have it within you. We all have it within us. हाँ, उरूज, we're all blessed to be those. जैसे उरूज ने शुरू किया अपना conversation and she talked about empathy, kindness की बात
कर रही थी, जो हमारा माँ वाला एक नर्चरिंग एलिमेंट है जो सिर्फ खवातीन के अंदर होता है और सबके अंदर नहीं होता, वी ऑल हैव इट, है ना उरूज, एंड वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज कर रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं इतना कॉन्फिडेंट कि हम उसी को इस्तेमाल करके, पॉलिश करके, नर्चर करके एक बेहतरीन जो है ना वो खातून को आगे बढ़ा सके, जो कि सो ये इसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे भी उरूज ने कहा कि कोई आपको एलीट नहीं बनना, आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना, आपने किसी बड़े एरिया में, किसी बड़े घर में रहने का मतलब एम्पावरमेंट नहीं है। ये सब वो चीज़ें हैं जो मटीरियलिस्टिकली शायद कम्युनिटी के बहुत सारे फैसेट से डेवलप हो गई है उरूज ओवर द ईयर्स, और वही ब्रेक करने के लिए मेरा जैसा नाचीज और उरूज के जैसा शख्स जो है वो मुस्तकिल काम करने की कोशिश कर रहा है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि जैसे आपने अपनी बातों के दौरान उरूज यू टॉक्ड अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज अनदर पेन पॉइंट ऑफ आवर कम्युनिटी के जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, बड़े कम लोग जो हैं वो हमें सुनना चाहते हैं। जब हम कोई कंपटीशन या कोई बड़ा सा प्राइज मनी या कुछ रखेंगे तो सारे के सारे भाग कर आते हैं, तो यू नो, एंड दिस इज समथिंग which has always been a pain point for our female community as well. जिसकी वजह से Urooj, what we've started doing is that we've started speaking about what value the session will add to a female's personality or their career, etc. And then we deliver what we're trying to deliver. आप क्या कहना चाहेंगे हमारी community को, the female community के learning and development के avenues को, क्या इन लोगों को लैच ऑन करना चाहिए या मिस करने की पोजीशन में हैं हम एज अ कम्युनिटी? No, बिल्कुल भी नहीं, because that's where everything starts, you know. आपको इतना लगता नहीं है कि those things are important, क्योंकि immediate effects आपको उस चीज़ के नहीं दिखते. You know, whereas जो आप example दे रही थी competition का, पैसे मिलेंगे या trophy मिलेगी, whatever, the immediate gratification is there. तो आप सोचते हैं कि ये ज़्यादा important चीज़ है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. But you know, the long-term effects of not focusing on the importance of nurturing a child or nurturing a young girl or a boy, and facilitating that growth for them to become functional and adults in society that give back to their communities is a much greater loss than a trophy or a large sum of money or whatever it is that they might be getting from a competition. Wow. बिल्कुल, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन उरूज इज टॉकिंग अबाउट इज द फैक्ट कि हमें फौरन वो सेटिस्फैक्शन हो गया कि हमने अचीव कर लिया, हमारे पास कोई गिफ्ट आ गया और ये हमें, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ सक्सेस है, सस्टेनेबिलिटी की बात है और एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन की बात है, खवातीन तो ज़रूर प्लीज़ प्यार से हमारी बात सुने कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज समथिंग दैट यू शुड लैच ऑन टू। कहीं आपको नजर आए फेसबुक लाइव और कहीं कोई जबरदस्त एक्सपर्ट उरूज के जैसा बैठा, आप फटाफट वो लाइव देखें, प्लीज वो वीडियोस के ऊपर जरूर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इट्स जस्ट द फैक्ट दैट हर इंसान की जर्नी से वी लर्न और हर इंसान के ट्रांजिशन से हम सीखते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू सपोर्ट ईच अदर एज फीमेल्स इन द कम्युनिटी, कि एक दूसरे को सुनना, लेट्स बिकम बेटर लिसनर्स, है ना उरूज? आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू एज वेल. Of course, yeah, that's where everything starts is when you listen. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, so there've been a lot of people who've joined us in between and as usual बातों में जो है वो मिक्स हो गया, स्किप हो गए बहुत सारे लोग. गुले मकसूद joined us, thank you so much. तलहा, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब थोड़ा बहुत मिल गया होगा. साजिद अली Safi is saying that he's sending his prayers to us for keeping up the kind of work that we're doing. Zoed Mirza has joined us. Thank you so much, Zoe, for joining us, the director of Cornell University, who does the Mindful Monday Nuggets, mashallah, regular with us. Wasim Khan Lashari is also liking the program. देखिए, आज के प्रोग्राम का जितना जो एक सबसे बड़ा मुझे लगा कि ये ज़रूरी है of catching on to Urooj and trying to have a program done with her is the fact that
it is much needed, as I said, for us to sit with the community again to bridge the trust deficit that's happened within the community within the past few years. Jahan pe everybody's not really comfortable coming back to this learning and development wala avenue. So if Urooj, I am to ask you before we wrap up the show, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी हम एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है and the community would love to know what you would want to be working towards within our community, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका दिल कहता है और आपका दिल चाहता है कि आप इन चीजों को लेके खवातीन के साथ बच्चियों के साथ बात करें और काम करें उस डायरेक्शन में? What are those things that you really want to do with us? Oh goodness, so many. There's so many. It's hard to choose one, but I think But anything that's closer to your heart, huh? And you can feel free to tell us all because we would love to hear your passion and we would love to know your direction. But वैसे आपको क्या लगता है? What are those things that are really close to your heart and you feel कि जरूरी है अभी? If now, then फायदा नहीं होएगा. What are those? I think mentorship is a big one. Figuring out ways that we can really psychologically support students as they're going through transitions in education. That's a big one. ये जो मैंने पहले आपको बताया था, my interest as I go further in my career and in my training as a physician is really figuring out ways that human rights can interface with psychiatry, in particular child psychiatry. Juvenile justice is something I'm interested in. Juvenile justice with the small kind of areas within the developed world where children are housed for committing crimes. Figuring out how we can rehabilitate them and support them in order to be integrated back into society in an effective and meaningful way. Though all of these interests evolve all the time, so I'm just getting started, I think, figuring out what the right Wow. Thank you so much for your time, Urooj. और हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे to everybody who's tuned in to watch us. And we would also like to take the opportunity to announce the fact that we will try to work on programs, inshallah, with Urooj, and we will try to bring her back somehow and make her presence felt within the female community, where we can probably work on leadership programs or probably work on other essentials, जो कि उरूज का भी इंटरेस्ट है, mentoring hub का भी passion है और हमारा भी vision है together. So thank you so much everybody for joining us today. And as I always say, this is just the beginning. जैसे उरूज ने बोला, she's just getting started. We're going to be back with another soulful guest, inshallah, next Sunday. Until then, you stay tuned and take care, God bless, and have a very beautiful week next week. और ज़रूर याद से आपने हमारे डायरेक्टर साहब का मंडे माइंडफुल नगेट मिस नहीं करना कल सुबह.